पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई छोड़ के कुछ है ही नहीं है तुम्हारी अर्ली लाइफ में। ओके बट अगर तुम्हें प्यार हो रहा है तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि तुम प्यार छोड़ दो, क्योंकि प्यार बहुत कम लोगों को होता है, बहुत लकी लोगों को होता है। इफ़ यू थिंक कि भाई आज तो मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पाएगा, वैसा मेंटालिटी रखो तो नहीं चलेगा। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ईगो। मुझे लगता है तुम्हें पता है पर तुम्हें नहीं पता है। आफ्टर डेलॉयट आई गॉट रिजेक्टेड इन 3 more interviews. This is Erudition India podcast, where academic wisdom and pop culture coincides. Hello and welcome to the first podcast episode of Erudition India, and our first guest is Mr. Orko Mojumdar, who is working with ICICI Bank as a solution manager in rural banking and microfinance. Please welcome Mr. Orko Mojumdar. Orko, how are you? I'm good, Amanashu. How are you? I'm fine too. I'm fine. So, tell me about your experiences that you had during your academic journey of class 10 to 12. Class 10 to 12. Yeah. So, till class 10, matlab, I was a somewhat okay student. I had decent scores. So, for a student like me, the obvious option was to go for science. Right. So, in 11, I opted for science like everyone else does. So, but after a few months, I realized कि भाई this is not my thing. मेरे से हो नहीं पा रहा है। और मुझे मतलब मेरा पूरा कम्प्लीटली मॉरल डाउन हो चुका था, क्योंकि फिजिक्स जो था उसमें मैं काफ़ी वीक था और ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। तो मैं सोच रहा था कि इसमें अगर कंटिन्यू किया तो शायद मेरा करियर ही पूरा ख़राब हो जाए। तो आई स्पोक टू अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर अगेंस्ट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लोग बोले कि भाई तू साइंस छोड़ देगा, इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या ही बनेगा। बट लकीली माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। दे सेट कि मतलब इफ़ यू वांट टू pursue a different option, then you have full freedom to do so. तुम्हें लगता है कि तुम इसमें करियर बना लोगे तो यही। Right. So I was lucky in that respect, and ठीक है, I feel that my choice was the correct one because Later on, it turned out to be perfectly fine. yeah, exactly. So, it's perfectly okay not to pursue science. If any one of you feels that science is the ultimate goal that you should pursue, that is not always the case. You should always check what is the subject that interests you the most. And most of you have heard this: do what you love and love what you do. That's the motto. Moving on to our next question. We have a lot of questions for today. The second question that we have is, after clearing class 12, what were the major academic decisions that made the man that you are? That's a tough one. So basically, after you're done with commerce, the most logical option is to go for BCom, Right. and that is what I went for. BCom. Unless you are doing BBA and BBA, MBA. huh? Yeah. But most people Go for go for BCom. BCom. So I got into a decent BCom college in Kolkata. It was under Calcutta University. Okay. What was the name of your college? It was South City College, Kolkata. South City College, Kolkata. हाँ. Brilliant institution. It is, yeah, but ठीक है, not as good as Saint Xavier's. So, but ठीक है, in college, very honestly, I wasn't that good of a student. I barely managed to clear first division. And But there are a lot of distractions that come yeah, around in because the college life. exactly, because I'm in college suddenly, मतलब, it's a new world, meeting lots of new people. So, Exactly. but I managed to get decent scores throughout, and it was a normal, nothing extraordinary. So the big question came after college when I graduated. Ki, now what do I do with my life? So my dad owns a business, so that was an option for me. But for some reason, I did not want to be a businessman or an entrepreneur. So the other option for me was higher studies, and I thought MBA would be the best option for me going forward. So after graduating, I took 2 years off to prepare for the entrance. Correct. And in the first year, I did not clear any exam. So I decided to study for 1 more year. तो उसके बाद मेरा ठीक ठाक स्कोर्स आ गए कैट और जेड दोनों में, और मैंने IMT गाजियाबाद बोल के कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। ठीक ठाक ही कॉलेज था, मतलब उस टाइम तो Tier 1 में आया था, प्लेसमेंट्स भी डिसेंट थे, तो ले लिया मैंने। और हाँ, तो उसमें मैंने MBA फाइनेंस किया, विच इज़
And this was the first time that you had to move out of your house. Right, right. This is the first time I've been moving out of Kolkata, and not just the city. I'm moving to a different country at this point. अच्छा, मतलब मैंने समझाया नहीं, क्योंकि मेरे एमबीए में एक चीज था कि there was a small period of time where you have to go to Dubai for Okay. a small exchange program thing. Okay. And this was right in the beginning of the semester. बहुत लोगों का मिड सेमेस्टर होता है या एंड सेमेस्टर में होता है, मेरा बस स्टार्टिंग में. Okay. तो मैं जस्ट कोलकाता से निकल के कोई और दूसरे सिटी नहीं गया, मैं एक दूसरा कंट्री चला गया. तो इट वाज अ Okay. बिग कल्चर शॉक फॉर मी, मतलब उस टाइम की. And a big journey for you. एग्जैक्टली. Moving on to our next question. So, like you have said, that you had to move out of your home state, अपने शहर से, अपने घर से बाहर जाकर पढ़ाई के लिए. How was that experience? सी इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं देख अपना लाइफ का 20-22 साल सिर्फ कोलकाता में ही रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, और अचानक मतलब पूरा देश के बाहर चले जाना, तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गए. बट ग्रेजुअली आई एडजस्टेड, आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, मतलब स्टार्टेड सोशलाइजिंग मोर, एंड ठीक है, धीरे धीरे वो कल्चर भी मैंने ऑब्जर्व कर लिया दुबई का. फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स आई केम बैक टू गाजियाबाद, तो फिर कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट का पीरियड था कि Right. मैं एक नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूँ, ईस्ट इंडिया से. बट ठीक है, मतलब देखो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट एक बार तुम अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओगे तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफी. ग्रोथ का रीजन वहीं पे है, हाँ, जहाँ कंफर्ट जोन खत्म होता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Right. Moving on to the next question. Now, please tell us about the experience you had regarding your first job interview. Yeah, so my first job interview was at this company called Deloitte. Since I was an MBA, look, since my MBA was in finance, so Deloitte was kind of like the dream company for me. Okay. So the first part of my interview was pretty chill, to be very honest. They were asking, So, being a fresher, being the first time job interviewee, right, you went to such a large company, exactly, and that did not go pretty well for you. yeah. I was nervous at first, and then when the interview started, they were asking me basic questions about myself, and I think I answered them pretty well. Okay. But once they started asking about technical stuff, that is when I started fumbling, and it kept getting worse. Was it due to the nervousness, or was it because you had a little shortage of the knowledge Knowledge, that they asked yeah, for? it is a bit of both. I was nervous. Some questions that I could have answered, I still fumbled, Okay. and other questions I did not have the knowledge. So it A was lot of pressure comes with the first job interview. exactly, because it's a big company as well. Right. And so I was very disheartened after the interview. It was my first interview of my life, and I still fumbled it. But right now I feel it was a big learning experience for me. I realized what I did wrong, so I could fix myself before the next interview. So yeah, even if you fumble your first interview, don't get disheartened. It is a learning experience. It will help you prepare better for your next interview. और फिर जो क्लियर हुआ वो वाला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? वो मतलब इट ऑनेस्टली फेल्ट वेरी, मतलब मैजिकल. जस्ट मैं गया इंटरव्यू रूम में, मुझसे जो पूछा गया मैंने एकदम स्मार्टली आंसर दे दिया, कुछ रुकावट नहीं आया. दे ट्राइड टू मतलब आस्क मी ट्रिकी क्वेश्चंस टू टेस्ट माय आई गेस. So, how long did it take between the first interview and the one that you have cleared? It took a while actually. After Deloitte I got rejected in 3 more interviews, Okay. and the fourth interview I cleared. Because every interview that I sat for, I made one mistake or the other. Matlab, something went wrong. There's a Yeah, huge competition as well. There's exactly. a huge A lot of competition people as are well. competing for this role, and some of them are way more talented than me. So I kind of got nervous, missed some details, said the wrong things. But each of these interviews, matlab, they taught me something. Ki this is not something that I should do in the next interview. So, trial and error. So, friends, here is a wonderful lesson that we all should learn, that there will be time in our life when people will reject us in our academic field, in our career, in our love life, in our social life, and we should learn how to handle these rejections. And life is all about managing risk and how you can manage the way people treat you, even if it is not what you deserve. Hmm.
that is a learning experience that we can all go through. And now we have a three-part question. The first of which is, what particular advice are you willing to give to the students who are taking up commerce in class 11? यार देखो मतलब बहुत कुछ एडवाइस नहीं है very honestly. Commerce is not rocket science. It's fairly simple. Even science is not rocket science. True. True. But commerce is easier, मतलब at least in my opinion. Okay. But you have to have a love for numbers. If you're not good with numbers, then you should definitely not go for commerce. You have to have an interest in business, how businesses work, how accounting is done. If you don't, you will find it very hard to matlab, survive in commerce. So at least make sure you know what you're getting into. Now moving on to the second part of the question. What are your advices for those students who are just entering into college in these times? Yeah, so the first thing that I would like to say is that college is a completely different ball game compared to school. You are not prepared for college. मुझे लगता है तुम्हें पता है पर तुम्हें नहीं पता है. So ठीक है, ask for advice from people in your family, some seniors in college. At least basic तुम्हारा idea बन जाएगा. उसके बाद what I can say is don't skip classes. Be sincere about your studies because when I was in college, मैं बहुत एक्साइटेड था कॉलेज को लेकर तो इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं किया. मैंने मस्ती में टाइम काफ़ी बुरा दिया. तो There are a lot of distractions. बहुत सारा exactly. distractions There will be होता a है. lot of things to distract you from studies, bro. But do not get distracted. College is a very critical time for you. Be up to date with your studies. क्योंकि हमारे टाइम में ये सब था नहीं, कोई बोलने लायक, कोई यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी नहीं थे कि लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे. वी वेंट इन कम्प्लीटली ब्लाइंड. तो तुम जो लोग आज के टाइम पर एक मौका आ गया है कि है लोग तुम डिफरेंट लोगों के बारे में जान पा एग्जैक्टली रहे हैं एग्जैक्टली थ्रू तुम पॉडकास्ट यूट्यूब में एंड तुम जो पॉडकास्ट आ रहे तुम हर किसी लोग टाइप के लोगों का एक्सपीरियंस तुम जान पा रहे हो. तो विच इज़ अ गुड थिंग जो अपने टाइम में था नहीं. तो भाई मतलब पढ़ाई सिंसियरली करो, काम छोड़ के मत रहो, करते रहो ग्रेजुअली कि लास्ट में आके प्रेशर ना बिल्डअप हो जाए. ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है. मतलब मैं काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर. तो ये चीज़ अवॉइड करना ही आई गेस तुम्हारे लिए अच्छा होगा. तो वही स्टिचिंग टाइम सेव्स 9 वाला प्रोवर्ब यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है. एग्जैक्टली. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. तो सेल्स में जिन लोगों को पहला जॉब अभी रिसेंटली मिला है, इनके लिए क्या एडवाइस है? इनके लिए एक्चुअली मेरे पास अच्छा एडवाइस है क्योंकि मैं अपना काफ़ी जॉब एक्सपीरियंस नॉन सेल्स में था मेरा. ओके. और मैं अचानक बीच में आई मूव टू अ सेल्स जॉब. तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट कि आई हैड नो आइडिया हाउ टू डू इट, क्या करना है. आई एम गेटिंग थ्रैश डे इन डे आउट बाय माय सीनियर्स. बट आई केप्ट एट इट. आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स, ट्राई टू मतलब कॉपी व्हाट दे वर डूइंग. I implemented my own strategies. But the fundamental principle here is that कि you have to keep at it. If you think कि भाई आज तो मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पाएगा, वैसा मेंटालिटी रखोगे तो नहीं चलेगा. You have to let go of your ego and you have to keep working at it, keep doing it. And I promise you, after 6 months, you'll start to. Well, 6 months was what time it took me. It might be quicker for you. After a certain point, you'll start seeing results. And now we have a pretty much cliche statement with us कि बेटा अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर लो, प्यार व्यार बाद में हो जाएगा. So to what extent do you support or not support this statement? Oh, That's a tough one. yeah, it's a very tough one. यार मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ Okay. क्योंकि पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है. पढ़ाई छोड़ के कुछ है ही नहीं है तुम्हारी अर्ली लाइफ में. Okay. बट अगर तुम्हें प्यार हो रहा है तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि तुम प्यार छोड़ दो क्योंकि प्यार बहुत कम लोगों को होता है, बहुत लकी लोगों को होता है. Okay. हाँ, बट प्यार भी ऐसे करो कि तुम्हारा बाकी का लाइफ हैम्पर नहीं हो जाए. पढ़ाई So there has to be a balance. ऑलवेज. Exactly. पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, बट प्यार हो रहा है तो उसे रोक के मत रखो, उसे होने दो. And it might turn out that वो प्यार ही तुम्हारा काम पे फोकस करने का एक मोटिवेशन बन जाए. एग्जैक्टली. But that's a very tough motivation to have, and that's a very tough balance to maintain. So It is. So the final verdict coming from Orko is Love is not easy, boys. So if you're falling in love, not just boys. and girls, I'm so sorry. Okay.
Yeah, but love is not easy. If it's happening to you, consider yourself lucky, but do not lose yourself in the process of love. Focus on your goals, your dreams. दोनों को बैलेंस करके चलो, सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा. For our next question, we have a very important issue. जो भी लोग शहर के बाहर, अपने होम टाउन के बाहर अकेले रहते हैं, खाना बनाना काफ़ी important aspect होता है. Cooking is a very important aspect for them. So, ऐसा क्या एक्सपीरियंस तुम शेयर करना चाहोगे कि how you would wish that learning how to cook in the earlier part of life could have helped you, could have made your life easier when you were staying in a different city all alone? Yeah, cooking is one of the most important skills that you can have. So, just after completing my MBA, I was living in Delhi with my flatmate. So he was the one who knew how to cook. So we had a normal system कि अपने पास गैस था, कुकिंग के सामान थे. He used to cook, I used to clean the dishes. That was the arrangement. तो बीच में he went back to his hometown for a while. तो खाना बनाने का कोई था नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं ऑर्डर करके खाऊं. और आई वॉज सो हेल्पलेस एट दैट टाइम कि मैं क्या खाऊं तो क्या खाऊं भाई. मतलब सस्ता खाना कितना दिन ही खाएंगे, कभी कभी मन करता है कि थोड़ा अच्छा कुछ बना के खाए. तो दैट इज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. सो आई वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस. घर पे सामान सारा कुछ था, गैस है, फ्रिज है, तो क्यों नहीं मैं खाना बनाऊं. And this was in the year 2018. 2018. That was the time when a lot of YouTube channels were coming Yeah. up with a lot of different contents, Yes. So different cooking kinds of channels were cookery pretty show. popular back then as Yeah. well. And that actually helped you a lot. It did a lot. So वही help जो 2011-12 में नहीं मिल पाया क्योंकि हाँ. YouTube उतना डेवलप नहीं नहीं था और ना था. ही इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे. Hmm. 2018 तक जब हम लोग आए तो यहाँ पर काफी सारे डेवलपमेंट देखने को मिला. Exactly. That's an evolution. Yeah, it was That's an a evolution. blessing for me उस time YouTube. Moving on to the next question. What are the upside of working in a bank? Yeah, one of the major upsides is that people will start respecting you of a sudden, all of a sudden कि भाई ये तो बैंक में नौकरी करता है. ऐसा कुछ है नहीं, बैंक भी कुछ स्पेशल नहीं है. बट हाँ, एक्चुअल अपसाइड्स है बैंक में. यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ बिग पीपल. व्हेन यू वर्किंग फॉर अ बैंक, देयर इज अ हाई चांस यू विल बी वर्किंग विद बिग क्लाइंट्स एंड दैट विल गिव यू अ लाइक Networking opportunity. अ लॉट. बिकॉज तुम शायद इससे पहले कुछ जॉब किए नहीं हो, उतने लोगों से मिले नहीं हो, और नाउ सडनली यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग विद बिग पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ. So you can get a lot of understanding about how to plan your career, how to talk to people, how to engage with people just by talking to these guys. क्योंकि ये लोग इतना कुछ कर लिए अपने लाइफ में, तुम्हें इन लोग से बात करके बैठ के तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक्सपोजर है बैंक में. और ठीक है, मतलब बाकी सब कुछ यार बाकी कंपनीज में भी होता है कि स्किल डेवलपमेंट, ये वो बैंकिंग का कुछ यूनिक बात नहीं है. बैंकिंग का मेन है कि यू, इट्स अ क्लाइंट फेसिंग जॉब मोस्टली. गेट टू टॉक टू पीपल. तुम जितने लोगों से बात करोगे तुम्हारा उतना नॉलेज बढ़ेगा और तुम उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे अपने लाइफ में. What are some of the life skills that you have learned recently within the last 1 year that you wish you knew earlier? यार लाइफ स्किल्स एज इन, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट हार्ड स्किल्स एज इन जो कॉर्पोरेट वाले, Anything, जनरल लाइफ स्किल्स? anything that is helping you today हाँ. that you have learned in the last 1 year Okay. that you wish that you had known it Okay, in the okay. earlier part of your I life, in the understand. earlier part of your I career. understand. So I just started washing my own clothes from last year, which Okay. I did not know how to do before this. Okay. It's very shameful, I know, but It's never too late to learn. it's never too late to learn. I wish I had known how to wash my clothes before, क्योंकि पहले से लोगों को पैसा देके कर ले रहे थे. I wasted a lot of money on laundry. Now that I can do my own laundry, I'm saving a lot of money. So ये तो है. That's a brilliant piece of advice. So, first and foremost life skills that we should learn is how to cook and then how to do your own laundry, because these are some very basic things that many of us do not learn simply because we are staying with our parents. True. We are staying with in a joint family, and there are people who are doing all these heavy work for us, and we don't have any clue how all these things get managed in their own way. But once when we are out in the open field,
we get to experience that life उतना easy नहीं है, and हमें हर एक काम को करना पड़ता है, हर एक काम को समझना पड़ता है, whether we like it or not, whether we are perfect in doing the task or not, but ultimately life हमें सिखा ही लेता है. That is a very brilliant piece of advice. एग्जैक्टली क्योंकि यार अभी तुम्हारे मम्मी कर दे रही है, तुम्हारा नौकर कर दे रहा है, बट एक टाइम अगर आया कि तुम्हें करना पड़े तब तुम क्या ही करोगे, मतलब छोड़ दोगे, नहीं करोगे. That is true. So before wrapping up this session, we have a last and final question for you. That is, what is your final message to all the youth watching this program, all those coming within the age group of 16 to 25, whether they are a student or they may be doing some kind of job? What is your message to the entire youth? What I would like to tell them is to keep at it. This is the most important piece of advice that I can give someone. Keep working. मतलब if you'll face a lot of struggle, you'll face a lot of roadblocks, but never stop working or never stop believing in yourself. मतलब हाँ, बट इसका एक चीज़ भी ये भी है कि मतलब डोंट वर्क ब्लाइंडली. मतलब तुम्हें काम करना इसलिए कर रहे हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग दैट यू लव, समथिंग दैट यू एक्चुअली वांट टू डू. नहीं तो ऑल योर एफर्ट इज वेस्टेड. बट नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स. तुम जितना भी स्ट्रगल फेस करो, जितना भी तुम रोड ब्लॉक फेस करो लाइफ में, अपनी काम करते रहो, काम नहीं रुकना चाहिए. बस यही मेरा एडवाइस. And like that famous song, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. That we have learned from multiple experiences that Orko has shared with us. Being rejected from one or two companies, he kept on fighting for his dream, he kept on working towards his goals, and today he's a big guy working with ICICI Bank. And there are many more like Orko who did this kind of ventures, who faced a lot of rejections, and then they were able to move to their destination. They were able to reach their goals successfully and very eloquently. That is the message from Orko to all of you. Thank you very much for watching this show. Goodbye. Goodbye. Thank you for being with us. Stay healthy. See you soon.